Hello, friends. Let us check the section Prokaryotic Cells from the chapter Cell, the Unit of Life. First, we need to understand the meaning of the word karyon. Karyon means nucleus. When you talk about prokaryotes, this word implies that they do not have a well-defined nucleus. Okay, they have incipient nucleus, mane properly developed nucleus নাই. Fine. Almost all of you might be well aware of the fact that our cells, we have nucleus, that is the master controller, the nucleus, right? So prokaryotes do not have a well-defined nucleus. Tahator at a well-defined nucleus নাই. Well-defined nucleus নাই অর্থাৎ যিখিনি জেনেটিক মেটেৰিয়েল বা ক্ৰোমোজোমছ সেইবোৰ ওপেনলি নেকেড হৈ পেলাই সাইটোপ্লাজমত থাকে so they do not have a membrane bound nucleus. Fine. আৰু তাহাঁতৰ কোনো membrane bound organelles নাই. Membrane bound organelles like chloroplast, mitochondria, those kind of structures are absent in prokaryotic cells. When we mention about the prokaryotes, that means they have a nucleus which is kind of primitive, previous. Okay, then this basically includes a wide range of organisms like bacteria, blue-green algae, mycoplasma, or PPLO, pleuropneumonia-like organisms. Some of the important aspects, they're small. They can multiply very fast compared to eukaryotic cells. We'll be learning about eukaryotes as well. Just to mention here briefly, eukaryotic cells are those which have well-defined nucleus and they have membrane-bound organelles like human beings. Okay. Another important aspect about prokaryotic cells, they vary in shape and size. They have wide variation in their shape as well as size. Fine. Some can be rod-like, some can be spherical, some might be occurring as filaments, some may be occurring in groups or as thread-like structures also. Now, when you talk about bacteria, bacteria basically have four basic sets. Number one, bacillus or rod-like, coccus or spherical, vibrio, comma-shaped, spirillum, just like your Maggi noodles, spiral-shaped. Fine. When we talk about prokaryotic cells, we have to study a lot of things. Okay, first, the cell envelope. Okay, as the name suggests, the envelope is something that will basically enclose the entire content of the cell. Okay, covering kori rakhibo. Then we have the mesosomes and chromatophores. Then we have to study about the nucleoid, flagella, Pili and Fimbriae, ribosomes, inclusion bodies. So let us check one by one. First, we have to deal with the cell envelope. So you might be using envelopes, okay, when you write letters and or maybe some other important documents. When you need to post, you do use envelopes, right? Now, when we talk about the prokaryotic cell envelope, this is a very complex protective covering. So chemically tahati bahut complex hoy aru cellor bhitor bostu khini protect kori rakhe. There are three tightly bound layers. Okay, these three layers are: number one, GLYCOCALYX, which is towards the outside, মাজত থাকে cell wall aru bhitor phale থাকে plasma membrane. अंदर की तरफ रहता है plasma membrane. ठीक है? So first thing we need to study is about GLYCOCALYX. Okay. Normally when you talk about the word glyco, in biology it generally means sugars. Okay, carbohydrates. So GLYCOCALYX is the outer layer, and the composition and the thickness, kiman hokot hobo, ki bosture gothito, beleg bacteria beleg hoi jay. Okay, this will change from bacteria to bacteria. Now, sometimes this GLYCOCALYX can occur as a loose sheet. In that case, we call it a slime layer. Ketiaba, ekdom patla loose sheet type occur kore, tetia ami tak slime layer boli ko. And in some other bacteria, this GLYCOCALYX could be very thick and tough. Okay, hokot hobo pare, tough hobo pare.
then we call it as a capsule. Okay. Now we move on to cell wall. Simple description all of us say. Even though it is simple, but it is not so simple in reality. But for the sake of understanding, just make sure you know this basic facts. The prokaryote cell envelope, what cell wall is the middle layer. Almost all prokaryotes ote ami cell wall dekhi pao. Okay, it is seen in all prokaryotes. And what are the function of the cell wall? Basically, it gives shape to the cell. Okay, at a bacterial cell hok ba other prokaryotic cell jene cyanobacteria hok, tahatok at a particular shape diye. Fine. Then apart from giving shape to the cell, it also provides structural support. At a proper structural support di rakhe, because of which bacteria to that suddenly collapse kori na jay ba burst hoy na jay. Okay, cell wall to main function hetu. Fine. Then inside you have the plasma membrane. It is the inner layer and it is semi-permeable in nature and interacts with the outside. So things have to come in, things have to go out of the cell also, right? Different nutrients have to come inside, then some metabolic waste have to go out as well. Now everything jodi pass kori diye tetia problem hoi jabo pare. Bahiror pa jodi sob toxic bostu ahi jay ba bhitor pa jodi sob cytoplasm sob bahirole gusi jay, then it might be catastrophic. Gutei cell to collapse jabo pare. So cell membrane বা plasma membrane খন এনেকুৱা এটা লেয়াৰ যেটো লিমিটেড বা পারমিশন টু দিয়ে বস্তু আহা যোৱা কৰিবলৈ, কিন্তু লিমিটেড উইথ দিয়ে. Okay, that's why it is semi permeable, not completely permeable. Another important thing, please remember, when we will study about the plasma membranes architecture in detail, when we discuss about the eukaryotic cell, you will find that prokaryotes are eukaryotes or mazot, a plasma membrane or structure to almost similar hoy. Okay, structurally that is similar hoy, both in prokaryotes and eukaryotes. But when you talk about the other organelles, then there are a lot of differences. Okay, whether you talk about ribosomes or other structures like mesosomes, then mitochondrial structure or chloroplast structures, they are completely absent. But similar belek কিছুমান structures থাকিব পাৰে. But when we talk specifically about plasma membrane, তাহাঁতে structurally similar হয়, both prokaryotes and eukaryotes. Okay, then ইয়াৰ উপৰিও আমি আৰু এটা কথা জনা উচিত এইখিনিতে. We have to know about one important aspect, that is about gram staining. Okay, now stain, you might have heard about the word stain. Something kiba ta jodi dag lagi gol ba color hoy gol, tomar saucer stain thaki jaba pare, telor stain dag thaki jaba pare, so that gives a color to a cloth or something, right? Thik he dore ami jetia microorganisms bor study koru tetia ami different coloring agents use kori pelai ba kisman reagents ba chemicals use kori pelai, we color and observe that colored cell under the microscope so that we can clearly distinguish A2 A2 hoy, A2 A2 hoy, A2 A2 hoy. Fine. So there was a person called Christian Graham. Okay, 1884. Okay, long time back. Okay, almost 138 years. Okay, so he developed a particular staining procedure or staining method to differentiate between different bacteria. Okay, now bacteria can be very useful, they can be very harmful as well. Kisman bacteria bahut bemar azar cause kore, kisman bacteria amak khana sana banabole sahay kore jane doi. Okay, then when you go to the medical world, particularly you might have to learn this simple process of gram staining. Okay, using this gram staining process, you will be able to tell which bacteria is gram positive, which is gram negative. Now what is gram positive, what is gram negative?
I already told that Christian Graham had developed a staining process. তেখেতে কিছুমান specific chemicals use কৰি পেলাই bacteria বোৰক differentiate কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, মানে classify কৰিব চেষ্টা কৰিছিলে, difference বোৰ কি হয় understand কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, fine. So সেই chemical colors বোৰ যিবোৰ bacteriaই absorb কৰি বা cell wallত take up কৰিছিলে আৰু ধুই দিয়াৰ পিছতো retain কৰিছিলে long term কাৰণে থাকি গৈছিলে, তাক gram positive bacteria বুলি কোৱা হয়। আৰু যিবোৰ bacteria did not retain the gram stain, he termed that as gram negative bacteria. So gram positive bacteria, you can see here, you have an example of Staphylococcus, you can see here, and Escherichia coli or E. coli, this bacterium can be found inside your body as well. This is a gram negative bacteria. Okay. Please remember, bacterium is singular, bacteria is plural. Bacterium mane BACTERIUM, single bacteria bujay, aru bacteria it's multiple, plural, bahut kita bacteria bujay. Fine. Eta gram staining or process to just simple hoy, ki hoy sailwa. Suppose tumak dise experiment koribole, carber suppose urine, okay, you have joined the medical and you have to test the urine sample, okay, pesabor sample to eta pesabor sample to olop sample loba, glass slider uporote tumi olop spread kori diba, okay, then let the sample dry, olop deri botahote enike thoba, air dry koriba, tar pisot glass slide khon ekdom 3-4 seconds or karone fast hunkale flame etar uporot just move kori diba randomly to and fro, okay. So a process to jorito ki hobo, jikhini sample asile hekhini glass slide dot fix hoi jabo, lagi dhoribo, fine. Etia jodi tumi microscope lot swa, if you observe the glass slide with the sample under the microscope at this stage, tetia eku clearly nedekhiba, just simple tat sa hoito bacteria sector thakiba pare, but we cannot differentiate, okay. In order to differentiate, ami eta kisuman coloring agents use korim, stain kisuman use korim. First step ki stain kora hoy, use kora hoy, that is known as crystal violet. This is also known as the primary stain. About 60 seconds or karne ami dip kori thoi dim, okay. Then we wash with water. Then after that we use another chemical, which is iodine, which will act as a mordant. Now what is a mordant? Mordant basically enekwa eta substance jitu e primary stain took besi dat kori logai rakhibole hohay koribo. It will act to fix the primary stain, okay. So iodine diar pisot aku ami 60 second manor kane tak dip kori rakhim, then we'll wash off. Now if it is gram positive bacteria, the gram positive bacteria will retain the primary stain, okay. Mane jodi gram positive bacteria hoy tetia violet ba purple color to thaki jabo, kintu jodi gram negative bacteria hoy tahator ki hobo, he purple color to ulai jabo ketia jetia ami decolorizing agent eta dim, that is normally 95% ethyl alcohol ba ethanol, that could be acetone also, ami acetone ba 95% ethyl alcohol dibo paru 5 second pa 10 second, besi deri nohoy, etu ekdom kom humor karone. Tar pisot last step ot ami ki korim, eta secondary stain dim. Secondary stain, what will be the secondary stain? We are using safranin. Safranin to dile ki hobo, jibur gram negative bacteria tahatia safranin or dye to ba safranin stain to nizor surface ot lobo, aru they will retain that and they will appear pinkish. Etia microscope ot olop jodi ami sao, jibur bacteria violet hoy tahati gram positive, jibur bacteria pinkish hoy tahati gram negative. So using this process we can simply find out which are the gram positive, which are the gram negative. This process is very important in studying the bacteria, okay. Etia gram positive bacteria kisuman characteristics beleg hobo pare, gram negative characteristics beleg hobo pare. So kisuman bemar cause kora bacteria normally gram negative thake, okay. Aru kisuman bacteria eneko mane gram positive gram negative difference to kyo hoy, why does difference come?
because of the difference in the cell wall structure. Okay, the gram negative and the gram positive bacteria have difference in their cell wall structure, because of which there occurs the difference in the staining process. Some will retain the gram stain, some will not retain. Okay, now let us check why this difference happens. So there is the difference in the cell wall structure. On the left hand panel, you can see the structure of a gram positive bacterium. Gram positive bacteria, you can see there is a cell membrane, that is the plasma membrane. Then above it, you have the peptidoglycan layer. So peptide bonds and some sugar, they will be linked together. Okay. Then you have special type of surface proteins and also special uh, teichoic acid and lipoteichoic acid. These special structures are present, special molecules are present in gram positive bacteria. Okay. Now, when we come to gram negative bacteria, what you can see, you have the cell membrane, then you have a peptidoglycan layer. But if you compare this and this, you will see that in gram negative bacteria, the peptidoglycan layer is very small. But in gram positive, the peptidoglycan layer is huge. Okay. That is the first difference. Then you also can find that there is a lipoprotein layer. Okay, lipids are proteins. Tahator lipids mane fatty substance. So tahator the layer thake and externally bahir fale there is lipids plus polysaccharides, lot of complex carbohydrates, big carbohydrates with lipids. So lipopolysaccharides are present as an additional layer in gram negative bacteria. So you can see that because of this difference in the cell wall structure, gram positive or gram negative bacteria will behave differently when you are staining them with the gram stain. Okay, so because of the different architecture, because of the different chemical molecules which are present on the surface, both gram positive and gram negative bacteria will behave differently. Fine. Then let us talk about mesosomes and chromatophores. Now, I already told that plasma membrane is towards the inside, right? You can see this plasma membrane. Then the dark one is the cell wall, and outside is the capsule, the glycocalyx. Okay, when it is thick and tough, it is known as glycocalyx. If it is loose, it is known as slime layer, right? So here, just for representation, they are showing it is a capsule, then you have the cell wall, then you have the plasma membrane. Sometimes what happens, the plasma membrane will fold towards inside. Okay, this infolding of the plasma membrane is very important. এই ভিতর ফালে plasma membrane to fold হয়ে যায়, ইয়াক কোৱা হয় মেসোজোম বুলি। Okay, এনেকুৱা এই ইনফোল্ডিংস বোৰ ভিতৰ ফালে যেতিয়া ফোল্ড হৈ যায়, কেতিয়াবা some foldings can be just like tube, they can be like short leaf like structure, they can be vesicles, সৰু সৰু tube like structures. So mesosomes বোৰ যেতিয়া মানে plasma membrane to ভিতৰ ফালে fold হয়, different shape, different structures হ'ব পাৰে. Okay, now what are the functions of this mesosomes? Mesosomes are multiple functions আছে. First and foremost, cell wall formation not mesosome সহায় কৰে. Okay, for the formation of cell wall, mesosomes play a very critical role. Then you might also be knowing the fact that when a cell divides, the genetic material or the DNA also has to divide so that the DNA can be transferred equally to the daughter cells. মানে যেতিয়া cell এটা divide কৰে, genetic material যিখিনি DNA থাকে সেইখিনি সমানভাৱে divide হ'ব লাগিব, replication হ'ব লাগিব, multiply কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে daughter cells বোৰত যাব পাৰিব, right? So সেই DNA replicationৰ সময়তো prokaryotic cellsত mesosomes এ সহায় কৰে. Fine. Then যেতিয়া DNA খিনি replicate হৈ গ'ল, তাৰপিছত daughter cellsত সেই chromosomes বোৰ equally distribute হ'ব লাগিব. So hey, distribution of the chromosomes to the daughter cells is also assisted by the mesosomes. So mesosomes chromosomes burok daughter cells distribute koribole bhag kori dibor karone sahay kore. Then you also might be knowing the fact that amar cells, eukaryotic cells, cat, dog, human, we have mitochondria for respiration, right? Mitochondria is known as the powerhouse of the cell, energy production sahay kore. এতিয়া তেনেকুৱা মাইটোকন্ড্ৰিয়াৰ নিচিনা স্ট্ৰাকচাৰ
prokaryote বা bacterial cells ত নাথাকে instead mesosome যেটো structure আছে তাহাতিয়ে respiration carry out কৰে okay so হেকাৰণে mesosome টো eukaryotic cellৰ mitochondria লগত functionally similar হয় তাৰমানে eukaryotic cellৰ যেটো mitochondria function carry out কৰে হেতু prokaryotic cellত mesosome carry out কৰে that is respiration. Apart from respiration, mesosomes are aru function ki different types of substances secrete kore, release kore. Okay. Aru eta bostu monot thoba. Please remember one more thing. In different living organisms, living systems, when a surface will fold, jetia surface eta fold hoy, jene ki yat plasma membrane to fold hoise, surface area to barhi jay. Okay, more the foldings, higher and higher will be the surface area. So it a plasma membrane khonote different types of enzymes thakibo pare. So jetia enokana foldings available hoi jay, tetia surface area to barhi jay. As a result, enzyme or activity, enzyme content to barhi jabo pare. Fine. So this are the different functions of the mesosomes. যেটি আমি chromatophores কথা কওঁ ইংলিশত chroma means color okay so chromatophores so within the cell যেনেকে mesosomes বোৰ membrane to fold হৈ প্লাই বনিছে similarly within the prokaryotic cells there could be some additional membranous foldings okay so अंदर में ही membrane fold होके उसके अंदर कुछ pigments रहते हैं pigments जिब्रे color দিয়ে okay cell attack কিছুমান cell green কিছুমান red কিছুমান blue appear কৰিব পাৰে so cyanobacteria or blue green algae so chromatophores are special type of pigment containing membranous enfoldings in some prokaryotes sub prokaryotes na thake কিছুমান specific prokaryotes chromatophores থাকিব পাৰে ebru membrane re folding hoi pele bona bostu ঠিক আছে then let us check nucleoid itia when we are talking about us eukaryotes we have a nucleus okay and inside the nucleus we have the genetic material DNA and all those things arranged in chromosomes fine now when we talk about prokaryotes burot ki hoy enekwa definite nucleus nai okay well defined nucleus eta nai nuclear membrane ekhon bound hoi thoka nucleus eta nai instead that ki hoy prokaryotes burot তাহাতৰ যেটো genetic material DNA আছে সেই DNA to naked মানে without any nuclear membrane just তোমার cytoplasmতে এনেকে occur কৰে okay this is known as nucleoid structure okay and this nucleoid is very important it has the genetic material that is DNA. It is circular in nature, ghuroniya type hoy, ekdom pak khai thake, and it has a lot of proteins associated with it, right? Then, apart from the nucleoid, bacterial cells brought কিছুমান additional genetic material থাকিব পাৰে. Okay, this additional genetic material are known as plasmids. Okay, PLASMID. So small, they are also circular DNA. মানে DNA to circular হয়. Okay, আৰু এই প্লাজমিড বুৰে কিছুমান ব্যাকটেৰিয়াক স্পেশাল characteristics confer কৰে okay for example you might be knowing that we use lot of antibiotics against different bacterial diseases okay but ki hoy ami jodi eketa antibiotic khai asu tetia bacteria to antibiotic resistant hoi jabo pare jimani ami antibiotic khaiso tothabi bacteria to nomoribo pare means even if we are using some antibiotics against a particular bacterium the bacteria might not be eliminated from your body because the bacteria might develop resistance against that antibiotic tamne jimane di thaka eku lav nai bacteria to resistance develop kori gol antibiotic or biruddhe tamne bacteria to ame mariboi pora nai there is a resistance to ahi goise kune dise is a plasmid ase a plasmid tur karone bacteria to special characteristics dekhai dise antibiotic resistance so yate eta shobdo paba tomalke textbookot it gives some unique phenotypic characters example resistance to antibiotics to bacteria so a plasmid bostu tur bahut important hoy bacteria cell letter
স্পেশাল ফিনোটিপিক ক্যারেক্টার ফিনোটিপিক মানে যেটো ক্যারেক্টার বাহিৰত এক্সপ্ৰেছ হয় তোমালকে যেটা হায়ার ক্লাস যাবা তেতিয়া আৰু এটা বস্তু পাবা জিনোটিপিক জিনোটিপিক মানে হৈছে যেটো তোমাৰ জেনেটিক মেটেৰিয়েলত জিন্স বুৰে ডিটাৰমাইন কৰি থাকে ওকে আৰু ফিনোটিপিক মানে হৈছে যেটো এক্সপ্ৰেছ হয় সো ৰিমেম্বৰ জিন্স বুৰে বা জেনেটিক মেটেৰিয়েলটোৱে বা ডিএনএ টোৱে फिनोटिपिक वस्तु तो डिटरमाइन करे जो अंदर में है उसको जीनोटिपिक कहते हैं जो बाहर दिख रहा है जितो एक्सप्रेस है तक फिनोटिपिक हुआ है फाइन আৰু এটা কথা মনত থবা এই প্লাজমিডছ যিবোৰ আছে দিজ আৰ এক্সট্ৰা নিউক্লিয়াৰ ডিএনএ বুলিও কোৱা হয় বা এক্সট্ৰা ক্ৰোমোজোমাল ডিএনএ বুলিও কোৱা হয় বা এক্সট্ৰা জিনোমিক ডিএনএ বুলিও কোৱা হয় দিজ প্লাজমিডছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ইন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড বায়োটেকনলজি ওকে প্লাজমিড বুৰক বহুত ইম্পৰ্টেন্স দিয়া হৈছে last few years or pra because they have been widely used in genetic engineering cloning koribor karone plasmid use kora hoy okay you will be learning about the process of cloning and all those stuff in higher classes fine then you also have something called a flagella so what are flagella flagella are basically thin filamentous extensions from the cell wall of motile bacteria some bacteria kisuman bacteria move koribo pare motile mane ঘুৰি ফুৰিব পাৰে fine so tahat move koribor karone kisuman special structures thake edal nezor nisna just like a tail they have a special structure called the flagella okay some bacteria might have a single flagella some bacteria may not have also kisuman bacteria ekdom nethakiba pare kisuman bacteria edal thakiba pare kisuman group of flagella thakiba pare etc etc okay now bacteria का जो flagella होता है उसका तीन पार्ट होते हैं the filament the hook and the basal body so you can see this flagellum is extending from the cell wall से ही ये बाहर निकल के आता है ये वाला flagellum ये flagellum का तीन पोर्शन होता है एक है basal body this is the basal body उसके ऊपर रहता है का हुक और जो बाहर जो लंबा वाला जो टेल जैसा पोर्शन है जो बाहर दिखता है उसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट ठीक है फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है ये पूरा फ्लैजेलम में और यूकैरियोट्स में भी कभी-कभी फ्लैजेला हो सकते हैं ये चीज याद रखिएगा यूकैरियोटिक सेल तो फ्लैजेला থাকিব পাৰে কিন্তু प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल और फ्लैजेलर ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर तो डिफरेंट হয় ओके इंटरनल स्ट्रक्चर ভিতৰৰ স্ট্রাকচার তো অলপ ভেরি করে ডিফার করে ঠিক আছে জাস্ট এটা মনত থোৱা ফ্লেজেলাৰ যেটো আমি বেসেল বডি পালো বেসেল বডি ডিফারেন্ট রিং লাইক স্ট্রাকচারস কিসমান থাকে এল রিং পি রিং এমএস রিং সি রিং এটসেট্রা দেন ইউ হ্যাভ দ্য হুক and you have the long portion called the filament okay and last portion of থাকে তোমার টিপ টু okay আৰু ই হুইপিং মুভমেন্ট টাইপ হুইপিং মুভমেন্ট মানে হৈছে সাবুক অসমে যেটো সাবুক বুলি কয় সাবুকৰ যিডাল মুভমেন্ট হ'ব তুমি যদি সাবুক এডাল মাইতে যেটো মুভমেন্ট বা মোশন দেখুৱা হ'ব হেতু কোৱা হয় হুইপিং মুভमेंट इंग्लिश में बोलते हैं व्हिप सो फ्लैजेलम का मूवमेंट जो होता है वो व्हिपिंग मूवमेंट होता है उसके सहायता से बैक्टीरियम आगे चला जा सकता है पानी वानी में मूव कर सकता है फाइन किसी होस्ट के अंदर वो मूव कर सकता है ब्लड में वो मूव कर सकता है ठीक है लेकिन एक चीज याद रखिएगा सब बैक्टीरिया का फ्लैजेला होता है ऐसी बात नहीं है another important thing flagellum is singular adult flagellum of bujay flagella that is flagella that is plural bahut flagellum of bujay so those bacteria which do not have flagella they are called atrichous जिसके पास सिंगल फ्लैजेलम है उसको मोनोट्राइकस मोनो मतलब एक जिस बैक्टीरिया के पास दोनों तरफ एक एक फ्लैजेला उसको एम्फीट्राइकस जिस फ्लैजेलम के चारों तरफ है उसका पेरिट्राइकस मतलब पूरा पेरिफेरी থাকে কিছুমান ব্যাকটেৰিয়ামৰ দুইটা সাইডত গ্ৰুপ বা টাফট অফ ফ্লैजेला থাকিব পাৰে তাক কোৱা হয় সিফেলোট্ৰাইকাস আৰু এটা সাইডে যদি অকলে থাকে তাক লোফোট্ৰাইকাস so atrichous monotrichous amphitrichous cephalotrichous peritrichous lophotrichous tricho শব্দটো বেসিক্যালি হেয়াৰৰ লগত এসোসিয়েটেড হৈ আছে দেই trichome tricho etc etc then next we have Pili and Fimbriae
আমি এইমাত্র কি দেখিলো just what we saw flagella were helping the bacteria to move. Okay, now Pili and Fimbriae, they are also hair like structures, but generally they are not playing very important role in movement, but they have other additional functions. Normally Pili or Fimbriae burs horu horu suli nisina tahati basically bacteria to movement ot hohai nokore kintu beleg functions ase. Okay, so Pili, बहुत को पिली बोलते हैं, सिंगल को पिलस बोलते हैं, ठीक है। वो छोटे छोटे elongated hair like structures होय, they are made up of special protein called pilin protein, PILIN. Okay, main functions क्या है पिली का? पिली बेसिकली एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया के साथ इंटरेक्ट करने में सहायता करता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन। और बैक्टीरिया के बीच में अगर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करना हो, एक बैक्टीरियम को दूसरे बैक्टीरियम के साथ डीएनए एक्सचेंज करना हो या डीएनए अपटेक करना हो, दूसरे बैक्टीरिया से डीएनए को लेना है बैक्टीरियल कंजुगेशन के दौरान, तो पिली सहायता करता है, इसलिए उसको सेक्स पिलस भी कहा जाता है, ठीक है। तो you can see in the diagram there are special sex pillars that will help in interaction among the cells. Okay, then you have another type of hair like structures called fimbriae. Okay, tahati ekdom mane horu small bristle like fiber type hoy jetu cellor bahiror ফালপা স্প্রাউট আপ করেছে, মানে জার্মিনেট করার নিচিনাকে করেছে। ওকে, সো फिम्ब्रिया स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। इनका फंक्शन क्या है? अभी क्या होता है कि सपोज किसी बैक्टीरिया ने आपके शरीर के अंदर घुस गया, किबा এটা बैक्टीरिया सपोज আপোনাৰ তোমালোকৰ শৰীৰৰ ভিতৰত সোমালে আৰু কিবা এটা টিস্যু বা অৰ্গানত গৈ পেলাই হি অ্যাটাচ হ'ব লাগিব, সেই অ্যাটাচমেন্টৰ কাৰণে এই ফিম্ব্ৰিবোৰে সহায় কৰে, ঠিক আছে। সো বেসিক্যালি the fimbriae help the bacteria to attach to the host tissues, and also this fimbriae help the bacteria to attach to rock surfaces in streams. जेटा कभी कभी क्या होता है कि पानी में बैक्टीरिया बहुत सारे फ्लो करे या किसी नदी में, तो जो कहीं पे अगर रॉक मिल जाए, पत्थर मिल जाए, उसके साथ अटैच होने के लिए फिम्ब्री सहायता करता है। ओके, देन वी हैव राइबोसोम्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Ribosomes basically 1955 what George E. Palade discover করেছিলেন। Okay, prokaryotic ribosomes और eukaryotic ribosomes, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन फंक्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। अगर आप किसी सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो यू विल बी ऑब्जर्विंग देम एज टाइनी डेंस पार्टिकल्स, সৰু সৰু পার্টিকলস গোটে মানে সেলটোতে ডিস্ট্রিবিউট হৈ থকা দেখিবা। ওকে, prokaryotic cells বুৰত বেসিক্যালি the ribosomes may be occurring in the cytoplasm or they may be associated along with the membrane. Okay, plasma membrane के साथ एसोसिएट होके रहता है। उनका साइज कितना है? बहुत छोटे हैं, 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर। नैनोमीटर मींस 10 to the power -9 मीटर। ओके, and these are basically made up of proteins and RNA. RNA मतलब ribonucleic acid. Okay, different types of proteins and different RNA make up the ribosomes. In प्लीज रिमेम्बर राइबोसोम्स के खुद के मेम्ब्रेन नहीं होते, ताहातो को बाहिर पा मेम्ब्रेने कवर करी नाथाके, ठीक है सर, जस्ट प्रोटीन और आरएनए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स या बैक्टीरिया के राइबोसोम्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, दुटा बेलेग बेलेग पार्टे राइबोसोम बनाए प्रोकैरियोट्स। These 2 subunits are known as 50s subunit and 30s subunit। 50s जो लार्जर है, 30s जो छोटा है। देखो अगर 50 और 30 को अगर हम लोग ऐड करें तो वो बनना चाहिए 80, राइट? 50 और 30 যদি আমি যোগ কৰো 80 হ'ব লাগে, কিন্তু এনেকুৱা নহয়। এটো কি হৈ আছে, ইয়াত যে S লেটাৰটো দেখিছা, S লেটাৰটো বেসিক্যালি হয় সেডিমেন্টেশন কোএফিশিয়েন্ট বা সোয়েডবার্গ ইউনিট। সোয়েডবার্গ এজন সায়েন্টিস্ট আছিলে, তেখেতে আল্ট্ৰাসেন্ট্ৰিফিউজ নামৰ এটা টেকনিক ডেভেলপ কৰিছিলে, আল্ট্ৰাসেন্ট্ৰিফিউজ মেশিন এটা বনাইছিলে। ওকে, দেন स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अभी क्या होता है कि लार्जर सब यूनिट जो 50s है और जो छोटा सब यूनिट 30s है, उनको अगर हम लोग बहुत हाई स्पीड में अल्ट्रासेंट्रिफ्यूज मशीन में स्पिन करेंगे, तार माने अल्ट्रासेंट्रिफ्यूज एटा मशीन है, इट इज अ मशीन दैट
जिसके सहायता से हम लोग सेल में जो भी सामान है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, सबको सेपरेट कर सकते हैं बहुत हाई स्पीड में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज किया जाता है। आप लोग इसके बारे में किसी एक दूसरे चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल जस्ट याद रखिए कि सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस के सहायता से हम लोग सेल के अलग अलग कंपोनेंट्स को हाई स्पीड में सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है से अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जो लार्जर पार्टिकल साइज है या जो स्मॉलर पार्टिकल साइज है, वो अलग अलग स्पीड से सेंट्रीफ्यूगेशन होगा। कोई कोई नीचे जल्दी आएगा, कोई कोई ऊपर ही रह जाएगा। ठीक है सर। देन you can see here the prokaryotic ribosome is 70s ribosome, but it has two subunits which are known as 50s and 30s. The 50s subunit has lot of proteins. The pinkish color is the these are the proteins, and you have RNA like 5s RNA and 23s RNA. जबकि जो छोटा सबयूनिट है 30s सबयूनिट, उसके पास भी RNA है, specific types like 16s RNA. उसी तरह अगर हम लोग यूकेरियोटिक राइबोसोम्स के बारे में बात करें, जिसके बारे में आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, दिस लार्ज सबयूनिट इज 60s एंड द स्मॉल सबयूनिट इज 40s. अगर हम लोग डायरेक्टली 60 और 40 को ऐड करें, वो होना चाहिए 100, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोनों मिलके क्या होता है, 80s होता है। ठीक है सर। लार्ज सबयूनिट तुम्हार प्रोटीन থাকিব प्लस 5s 5.8s और 20s RNA থাকিব और লগতে 18s RNA থাকিব। This you will be learning again, but for the time being you remember कि प्रोकैरियोट्स में 50s और 30s दो अलग अलग सब यूनिट होते हैं, और दोनों मिला के जो एक यूनिट बनता है, टोटल बनता है, उसको हम लोग 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स कहते हैं। ठीक है। Then what is this S? Now here you can see this is an ultracentrifuge machine. इसमें सैंपल्स सपोज आपके लिवर, ओके, या चिकन का लिवर या आपके ही लिवर को हम लोग ने ले लिया, उसको क्रश किया, और हम लोग चाहते हैं कि लिवर टिश्यू में जो भी सेल्स है उसके अंदर में जो भी न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, सबको अलग अलग सेपरेट करना चाहते हैं हम लोग, और बेलेग बेलेग के আমি আইসোলেট কৰিব বিচাৰিছো। ঠিক আছে। তো আমি এই আল্ট্ৰা সেন্ট্রিফিউজ মেচিনৰ ভিতৰত বহুত হাই স্পীডত ইয়াত মুভ কৰিম, আৰু ডিপেন্ডিং অন দ্য particle volume, shape, molecular mass, सब बेलेग बेलेग के सेपरेट हो जाबो, डेंसिटी वाइज सेपरेट हो जाबो। ओके, जीबुर पार्टिकल, जो भी पार्टिकल बड़ा बड़ा है उसका लार्जर एस वैल्यू रहता है। स्वेडबर्ग यूनिट बा सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट तो माने ताहाती ग्रेविटी तলত इनफ्लुएंसत सेटल डाउन करिवो। जीबुर हेवी पार्टिकल ताहाती तल फाले থাকিবो, और जीबुर लाइट पार्टिकल ताहाती ऊपर उपंगी থাকিবो। ओके, the larger subunit 50s হি তল ফালে যাব, আৰু যেটো smaller subunit হেতু উপৰ ফালে থাকি যাব। ঠিক আছে। so S value or the Swedberg unit, it is a measure of how quickly the particles sediment in an ultracentrifuge. So please remember that. Then we also have to know what is the function of the ribosome. But before understanding the function of the ribosome के function के understanding की तरफ जाने से पहले हम लोग को और एक चीज जानना पड़ेगा। There is something called central dogma in biology. Okay, this is very important thing when you are studying biology. Dogma word का meaning क्या है? Dogma word का meaning है some जो belief establish हो गया है और सभी वही सोचते हैं कि ये सही है। ठीक है। And basically इस central dogma में हम लोग क्या पढ़ते हैं? बेसिकली सेंट्रल डॉग्मा में हम लोग ये पढ़ते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। जब सेल डिवाइड करता है तो डीएनए भी डिवाइड करता है, और इसको हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं, जिसके सहायता से डीएनए नया कॉपीज बनाते हैं। फाइन। सो द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विल क्रिएट न्यू कॉपीज ऑफ डीएनए। ঠিক আছে। দেন ডিএনএ তোমালকে জানা যে জেনেটিক ইনফরমেশন তো থাকে। This genetic information will be copied, okay, to RNA through the process of transcription. Okay, previous was replication. Replication से क्या होता है? डीएनए से डीएनए बनता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए का इंफॉर्मेशन यूज करके आरएनए बनता है।
फाइन। कौन सहायता करता है? आरएनए पॉलीमरेज बोल के एक एंजाइम है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अभी जो इंफॉर्मेशन आ गया थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए राइबोसोम्स क्या करेंगे? प्रोटीन बनाने में सहायता करेंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। सो आरएनए का इंफॉर्मेशन यूज करके प्रोटीन बनाया जाता है। दिस होल sequence of events is known as the central dogma in molecular biology. So DNA is a genetic material within the nucleus. Process of replication creates new copies of DNA. DNA से DNA जब बनता है उसको replication कहा जाता है. Process of transcription will create RNA using DNA information. So DNA যেটো information থাকে হেতু information use কৰি পেলাই RNA বনে, that is known as transcription. And the process of translation will create a protein using the information that is carried in the RNA. Okay. So आप यहाँ पे देख सकते हो ये ग्रीन पार्ट है द लार्ज सब यूनिट एंड द ब्लू वन इज द स्मॉल सब यूनिट। ये जो 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, ये चीज के बारे में आप लोग बाद में पढ़ोगे, लेकिन आप जस्ट अभी ध्यान रखो ये जो लाल वाला चैनल क्राइब दिख रहा है ये आपका mRNA है, मैसेंजर आरएनए, और ये आप के डीएनए से इंफॉर्मेशन कॉपी करके अपने पास रखता है और इस इंफॉर्मेशन को ही राइबोसोम्स के सहायता से नया नया प्रोटीन बनता है, ठीक है। दिस इज द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड मतलब पॉली मींस मैनी, पेप्टाइड मतलब जो बॉन्ड प्रोटीन्स में रहता है, ठीक है। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक एमिनो ग्रुप इंटरेक्ट करने से पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है। एमिनो एसिड्स, एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड के साथ जब इंटरेक्ट करेगा पेप्टाइड बॉन्ड के सहायता से इंटरेक्ट करेगा, और एक प्रोटीन में बहुत सारे एमिनो एसिड जब इंटरेक्ट करेंगे तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड रहेंगे, इसलिए उसको पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। फाइन। सो राइबोसोम्स बेसिकली सेल के अंदर प्रोटीन्स बनाने में सहायता करता है। So the large subunit is responsible for creating the links in the growing amino acid chain. जो एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड के साथ इंटरेक्ट कर करके पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है वो लार्ज सबयूनिट सहायता करता है, और जो छोटा वाला सबयूनिट है 30S इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स वो mRNA को बांध के रखने में सहायता करता है, ठीक है सर। सो लार्ज सबयूनिट और स्मॉल सबयूनिट दुइटाই बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करे एज वन यूनिट। ओके, सो ये है राइबोसोम्स का फंक्शन, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन। सो राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल भी कहा जाता है जहां पे प्रोटीन मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये जो आप ग्रीन वाला फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो वो है आपका mRNA, मैसेंजर आरएनए। वो मैसेंजर आरएनए क्या मिला? जो डीएनए से अपने अंदर डीएनए का इंफॉर्मेशन कैरी करके रखा है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से जो आरएनए बना था उसी को मैसेंजर आरएनए कहता है, मतलब मैसेज लेके आ रहा है। डीएनए में जो मैसेज छुपा हुआ है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, वो इंफॉर्मेशन एमआरएनए में आता है और उसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एमआरएनए बनते बनते ही तुरंत ये राइबोसोम्स आरएनए के ऊपर बैठ जाता है और प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बना, उसके तुरंत बाद ही राइबोसोम्स आरएनए के साथ अटैच हो जाएंगे और ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा, मतलब प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा। सो सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू ए सिंगल एमआरएनए to form a chain called polyribosomes. So बहुत सारे राइबोसोम्स अगर एक ही एमआरएनए के ऊपर बैठे हुए हैं उसको कहते हैं पॉलीराइबोसोम्स, इसका दूसरा एक नाम है पॉलीजोम्स। So ribosomes of a polysome translate the mRNA into proteins. So mRNA में जो भी इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है उस इंफॉर्मेशन को प्रोटीन्स में कन्वर्ट करने के लिए राइबोसोम्स बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। Last part we have to know about the inclusion bodies. Inclusion bodies क्या होते हैं? इनके खुद के मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। They are basically responsible for storing different reserve materials. Okay, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में
ফ্ৰিলি ৰেতে ঠিক আছে সো কিছুমান মেমব্ৰেন নথকা structures হয় তাহাঁতৰ মেইন ফাংশন কি কিছুমান ডিফাৰেন্ট মেটেৰিয়েলছ ভিতৰত সোমাই থাকে আৰু তাহাঁতে সাইটোপ্লাজমতে ফ্ৰিলি থাকিব পাৰে সো ইয়াতে তোমালোকে দেখিছা এই ইনক্লুশন বডিজ বোৰ ওকে ইহঁতৰ ভিতৰতে ডিফাৰেন্ট টাইপস অফ সাবস্টেন্স সোমাই থাকিব পাৰে লাইক ফসফেট গ্ৰেনিউলছ সাইনোফাইচিয়ান গ্ৰেনিউলছ গ্লাইকোজেন which is a carbohydrate তেনেকুৱা বস্তু সোমাই থাকিব পাৰে কিছুমান অৰ্গানিজমত গেছ ভেকিউলছ থাকিব পাৰে গেছ ভেকিউলছ বোৰ কোট পাব পৰা এক্সাম্পল ব্লু গ্ৰীন পাৰ্পল আৰু গ্ৰীন ফটোসিন্থেটিক ব্যাকটেৰিয়াত গেছ ভেকিউলছ বোৰ থাকে okay so these are the inclusion bodies fine then with this we end up this section then we'll be learning about the eukaryotic cells in the next section till then have a great time keep learning